News coming in at the top of this hour. Protesters torch toll plaza in Bihar's Sasaram. Escalation in Bihar. Anti-Agneepath stir. Those are visuals, exclusive images that we're bringing to you from Sasaram in Bihar, where protesters have torched a toll plaza. Remember, several cities in Bihar are witnessing violent protests by those, in fact, protesting against the Agnipath scheme, the central scheme which has been just announced recently, the short-term recruitment scheme for the armed forces. Images now coming in from Sasaram in Bihar, where protesters have torched a toll plaza. They've been, in fact, vandalizing railway property in Ara, in Buxar, in Samastipur. They have vandalized buses. And now these images coming in from a toll plaza in Sasaram in Bihar, where protesters have in fact torched this toll plaza completely. It is gutted, as you can see on your screens right now, virtually lying in ruins at the moment. My colleague Sujit Jha is now joining me on the phone line from Patna. Sujit, सासाराम के ये विजुअल्स हम देख रहे हैं जहां पर एक टोल प्लाजा को आग लगा दी है इन प्रदर्शनकारियों ने, और क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, सासाराम में टोल प्लाजा में आग लगा दी है। दानापुर स्टेशन, रेलवे स्टेशन जो है पूरी तरह से धुआं है। यहाँ पर कई गाड़ियों में, एक ट्रेन फरक्का एक्सप्रेस यहाँ पर खड़ी थी, उसमें आग लगा दी गई है। इसी तरह से समस्तीपुर में आग लगा दी गई, हाजीपुर में भारी तोड़फोड़ की गई रेलवे स्टेशन पर। तो पूरा बिहार इस समय हम कहेंगे कि जल रहा है। और ये जो अग्निपथ स्कीम है उसके खिलाफ युवाओं का और जो प्रदर्शनकारी हैं उनका जो आक्रोश है वो काफी जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। हम जहां मौजूद है दानापुर रेलवे से, आपको विजुअल दिख रहा होगा, धू धू कर ये फरक्का एक्सप्रेस का इंजन जल रहा है मेरे सामने। और मेरे सामने ही हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी आए लाठी डंडे लेके। पुलिस मूक दर्शक बनी रही, पुलिस कुछ नहीं कर सकी। और देखिए, एक बार फिर से हलचल हुई है, उधर से पत्थरबाजी शुरू हो गई है। तो इस तरह से लगातार पिछले 2 घंटे से ये पूरा स्टेशन प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है। आरपीएफ यहाँ पर मौजूद है, जीआरपी के जवान मौजूद हैं, लेकिन बेबस हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इस ट्रेन में जितने भी यात्री थे सब अभी जहाँ तहाँ उनको जाना था, किसी को आगे जाना था, दिल्ली की तरफ जाना था, वो सब यहाँ पर जैसे तैसे सामान छोड़ के, हमने कई बोगियों में देखा कि सामान पड़ा हुआ है, लोग डर के मारे सामान छोड़ कर चले है। ये देखिए, ये धुआं जो दिख रहा है आपको, ये मालदा दिल्ली मालदा एक्सप्रेस है और इसमें आग लगा दी गई है। दानापुर में कई गाड़ियों में, जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उसमें आग लगा दी गई। लोग जो भी इधर से गुजर रहा है उसमें भी तोड़फोड़ की गई है, स्कूटी तोड़ दी गई है। तो बहुत सारा नुकसान हुआ है जो भी स्टेशन पर जिस तरीके का। Those are exclusive visuals that my colleague Sujit is bringing to us from Danapur railway station in Patna, where protesters have vandalized property. They have torched property over there. They have set fire to a train, a passenger train, is what he's reporting to us. And those are images on your screens from Sasaram in Bihar again, where protesters have torched a toll plaza. You can see the destruction and the damage which has been caused to the property, completely lying there in ruins, that toll plaza on your screens from Sasaram in Bihar. And you can see on the other side of your screen, in fact, those images from Danapur railway station in Patna, where a train and bogies of a particular train have been in fact set on fire by violent protesters. Several such images that are coming in from the state of Bihar itself, where protesters have turned violent and damaged property. Sujit is still live with us. He's reporting live from the ground in Danapur. Sujit, आप बता रहे थे कि आप आपके आसपास क्या देख रहे हैं? ये आप एकदम लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। ये फरक्का एक्सप्रेस है और इसकी बोगी में सामने पुलिस वाले खड़े थे और उसी में ये आग लगा दी गई। 1, 2, तीसरी बोगी जल रही है इंजन से और धू धू कर जलता हुआ। ये इसको बचाने के लिए बहुत सारे
पुलिस के जो आरपीएफ के जवान थे खड़े थे लेकिन बचा नहीं पाए। लगातार उधर से अटैक होता रहा, पत्थरों से, लाठियों से, डंडों से, और आखिरकार दानापुर रेलवे स्टेशन पर इसे आग लगाने में वो कामयाब रहे। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है, Sujit Jha there, of course, reporting live from Danapur railway station in Patna, where he was in fact showing us images of the Farakka Express, which has been in fact torched by protesters. Bogies, at least 3 to 4 bogies, he in fact was reporting to us, that have been set on fire, and more images, as you can see, of the destruction. Those live pictures. Let's listen into this report that Sujit has filed for us. ये दानापुर स्टेशन का दृश्य है। अभी कुछ देर पहले सब कुछ सामान्य था, लेकिन अभी पूरा धुआं उठ रहा है। जगह जगह जो है गाड़ियों में आग लगा दी गई है। पुलिस गाड़ी है, इसमें पब्लिक की भी गाड़ी है। पूरा तोड़ फोड़ की पत्थरबाजी की जा रही है। पत्थर चलाना शुरू हो गया है और ट्रेन में भी आग लगाने की कोशिश हो रही है। आग लगा दिया। दानापुर रेलवे स्टेशन का मुख्य द्वार है, वहाँ भी जो गाड़ियाँ खड़ी थी उसमें भी आग लगा दी गई। ये जो भी रास्ते से जो पब्लिक जा रहे थे, उनकी स्कूटी पड़ी हुई है, इसको भी तोड़ फोड़ किया गया। तो ये जो दृश्य है, ये काफी भयावह दृश्य है और इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा है। देखिए, पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। और जिस तरीके से दानापुर स्टेशन पिछले 1 घंटे से जो प्रदर्शनकारी हैं, जो युवा हैं, जो मांग कर रहे हैं, जो अग्निपथ पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, उनके कब्जे में है और पूरे स्टेशन को तहस-नहस कर दिया गया। ये दानापुर का स्टेशन, ये देखिए, अब ये देखिए, पुलिस इधर से तैयार हो रही है, इधर से जवाबी कार्रवाई करने के लिए। कभी उधर से प्रदर्शनकारी आते हैं तो कभी पुलिस इधर से अटैक करती है और पूरे स्टेशन पर अराजकता का माहौल है। और हम देख सकते हैं कि पुलिस पर से फिर से प्रदर्शनकारी पर भारी पड़ने के लिए अटैक करने की तैयारी कर रही है। कैमरामैन ये दानापुर स्टेशन का दृश्य है। Right, my colleague Sujit was there, of course, reporting from Danapur police railway station, where he is present at the moment. He, of course, saying that the protesters have been there, in fact, ransacking that railway station, and the trains were, in fact, there for a few hours. And the police, of course, was trying to contain the situation and stop the protesters from going completely amok at the railway station, but unfortunately they couldn't save some of those trains that were in fact stationed at the railway station over there. Images are coming in from Jewar now in Greater Noida, Uttar Pradesh. Those images of protesters out on the streets. Also images on your screens from Ballabgarh in Haryana as well, where protests have broken out, and some of those protests, a lot of those protests in fact turning completely violent. Those images of those protesters, as you can see, the police, of course, are trying to contain the situation. The police completely outnumbered, some of them injured as well in the process, as they try to contain the situation and ensure that the protesters do not do much damage to public property, as they've been doing over the past 3 days now. The government is trying to diffuse tensions, is trying to reach out to the protesters. Union ministers Rajnath Singh, Amit Shah, top ministers of the Modi cabinet, in fact, who have tried to allay the fears and apprehensions of these protesters who in fact are expressing absolute insecurity about their futures after this Agnipath scheme. They want the government to withdraw the scheme, but the government trying to tell them that there is nothing to be apprehensive about, that their futures are in fact going to be taken care of, even if they are not retained in the armed forces.